Hello! After a great session in the afternoon, I'm back for another session at the second edition of the Feminist Poetry Festival. My name is Saumya. And to all those who are joining in, thank you so much. Thank you so much for attending this festival. Thank you so much for being with us. For this session, we literally have a jewel with us, a very Nayab jewel, right? Whose name is also Nayab. And this lady, this girl, this woman, this fierce writer has been able to carve a complete niche of her own through her poems, which are suffused, which are full full of a lot of wealth of emotions, a lot of wealth of stories, a lot of wealth of relatability, which is why I think again I'm very fortunate I'm doing this session because I've been able to see Nayab perform on stage, and when Nayab takes the stage, I see women cry and men get stunned कि ये emotions कहाँ से आ रहे हैं. By the day, Nayab is a software engineer, but in her own time, she is a prolific poet. She's a storyteller. She's a stage performer, and what other things she encapsulates, that is what we will hope to discover in this session. Nayab, welcome to Feminist Poetry Festival. Thank you so much, Saumya. I'm genuinely so glad and very grateful that this whole is coming from you. Because when we met and you saw me perform, I was very scared that you're going to give me a brushing down the stage. But I'm very grateful that in a brief period of 2-3 months, we're here, we're doing this. So yeah, I'm very Absolutely. excited. Perfect. So, like Nayab just mentioned, right, about taking the stage and seeing me and getting scared. But what I really want to also admit here is it is through poets like Nayab and her specifically that my world opened up a little more to what the younger poets are doing, to what the younger poets, as to how the younger poets are actually able to connect with their audiences in a very unique, in a very pristine, in a very bonded manner, in a very connected manner, because they're speaking the language which people want to hear, which people resonate with. And all of these are things I want to talk about with you, Nayab. But before that, since I think your most powerful vehicle of expression is your poetry, तो आपकी एक बड़ी प्यारी सी पोएम है जहां से आप खुद एडमिट करती हैं कि आपकी पोइट्री की जर्नी किसी तरह से शुरू हुई, जिसका नाम है तुम खूबसूरत हो. तो नायाब, आप ये रिसाइट करें हमारी ऑडियंस के लिए और वहां से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. So, Tum Khoobsurat Ho is just about the fact that you're beautiful just the way you are, and you shouldn't stop yourself from anything. It doesn't change anything on the outside of you. You wake up, you put as much makeup you want to, you dress up the way you want to, but inside you should know that you're beautiful before that. So here I go. तुम खूबसूरत हो. तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो. चलते वक्त, रुकते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त. खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं. खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो. जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, इन कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, इस कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो. और जब ये बात झूठ लगे, और जब ये बात झूठ लगे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का. और इससे खूबसूरत क्या ही होगा, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का. तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम खूबसूरत हो. तब तक कहो जब तक ये आवाज तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा ना दे, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाएं, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना दे, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाएं, तुम्हारे बदन के कन कन को बता ना दे, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए, तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो. और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे,
मोटी हो गई हो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती, रंग तो देखो दही बेसन क्यों नहीं लगाती, ये पतली कमर 20 की छाती 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों ऐसी हजारों लाखों बातों से हमें हर रोज ये नीचा दिखाया जाता। मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज उड़ाया जाता। तो अगली दफा तो अगली दफा जब तुम्हें तुम्हारी नजरों में कोई गिराना चाहे, तुम्हें तुमसे ऊंचा कोई बताना चाहे, तो उसके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उससे कहना मेरी जान हम नहीं जानते, मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक पूरी यू। ऑडियंस की तरफ से खूब सारी तालियाँ। एंड पहुँची, ये कविता मेरे तक ज़रूर पहुँची। एंड मैं आपकी जो शायरी है, आप जिस तरह की पोएम्स लिखती हैं, मैं ये समझती हूँ कि वो किसी पर्सनल कॉर्नर से आती हैं, क्योंकि एट लीस्ट एज़ एन ऑडियंस मुझे झलकता है वो, मुझे वो चीज़ दिखती है। तो ये पोएम कहाँ से आई? So, a small story that I moved when I was in school. तो मैं एक बहुत नॉर्मल बेसिक स्कूल से थी, मेरे लिए इंग्लिश बोलना बहुत बड़ा टास्क था, सीखना समझना। सो आई वाज, मेरी माँ को बहुत था कि आई हैव टू पुट हर इन अ कॉन्वेंट स्कूल बिकॉज आई वाज इन अ स्मॉल टाउन व्हिच पीपल डोंट लेट मी कॉल इट अ स्मॉल टाउन नाउ व्हेन आई कॉल इट ऑन सोशल मीडिया। मुझे बहुत गाली पड़ती है, बट यस, हाँ मैं कहूँगी उस वक्त तो वो छोटा शहर था एक। और मेरी मम्मा को बहुत था कि आई हैव टू पुट हर इन अ कॉन्वेंट स्कूल एंड मेक हर शी, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, शी इज, आई वुड say that I am not, whatever I have is a part of her. So my mother, she put me through a convent school anyhow. She earned, my father, they put it together to put me through that. But एक्चुअली जब दे वो स्कूल का फीस तो आप भर देते हो, पर आपको जो काइंड ऑफ पीपल दैट आर देयर एंड द काइंड ऑफ complexes that you have to go through, because your tiffin box, your book covers, everything, क्योंकि एक बच्चे के लिए तो वो it affects you very deeply, even the smallest of the things. So I always felt inferior, always. uh, and I was always a misfit. Matlab, some days I'm clumsy, some days I'm stupid, some days I'm way too talkative. So never was a day where I'm slightly equal or superior, let's say. तो वो तो मुझे experience कभी करने को नहीं मिला. So yeah, it comes, and I realized that as I grow, it never stops. Every time I used to live with this, it was there somewhere. In 2019, I was working in Infosys where I was a software engineer. And my flatmate then was fighting with her body weight because somebody told her that her boyfriend only told her that I can't marry you. My family won't accept you until you lose some weight. So I don't know why it was constantly bugging, and that's where all of it came out in one. I constantly used to look up down. मेरे जो है ना जली आंखें और काले गड्ढे, वो तो मेरा है, वो अकेला मेरा है, because जितनी लाखों की क्रीम्स मैंने लगाने की ट्राई की है ना, I don't know, but it never goes away. So I had to be okay with it. I completely understand. So is this the poem from which your journey of poetry started? Yeah, it went viral again in 2019 itself. In a period of a month, it was 10 million. A lot of people from our industry shared it. Like, I connected to a lot of Sharib Hashmi ji, who's a star now. I connected to him back then. He shared this and he said, "हमारे जैसे लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है ये सुनने की." And when somebody, it sort of is a validation, but yeah, it. If you go and see the comment section of this poem, it's people telling each other that how beautiful they are and the fulfillment. Yeah. And I think that's the kind of revolution that Yeah, we are also looking for. Na? ऐसा नहीं कि yeah, एकदम we all have to be out there on the streets, but these are the silent rebellions that are very, very important. Like I yeah, always say, I'm a teacher. The only rebellion I want is for my students to be comfortable with the idea of who they are. yeah. Because so much is constantly fed to our brains. True. And when you were talking about body shaming and everything, and मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ. And I remember as a child, you have all that puppy fat. You're growing up. I'm Yeah, adolescent ho. yeah, And I was on Holi wet and dancing in gay abandon. I was late teenagers by then. yeah. And this is some auntie who walks up to me, she's like, बेटा आप कितने सुंदर हो, आप कितना अच्छा नाचते हो, अब ना थोड़ा वजन कम कर लो और कितने अच्छे हाँ. दिखोगे. And I think Hmm. उनको लगा उन्होंने अपनी तरफ से कोई बहुत अच्छी बात बोली. बहुत अच्छी, very amazing. Yes. या बट 2 दिन तक जो उसका इम्पैक्ट मेरे सर पे लगा, Yeah, मुझे उसको तोड़ने में एफर्ट लगा. सो बिल्कुल. कुडोस टू यू फॉर गिविंग वोकैब्युलरी
to something that so many of us have experienced. And I'm Yeah. sure it would have resonated with so many people. But I also want to pick on two things that you said. Number one, if you're writing such poem, like it's very interestingly, you just said ki my mother is a feminist. I am not. I would personally believe you are. I If you're am putting like whatever I wanted to say that I would not have been if she weren't. That is yes, the right way to phrase it. absolutely. And I think, again, that is great because in so many households, we've had to be feminists for our mothers, right? But if it came to you in a cultural setting, if it came to you as a legacy, इससे सुंदर क्या हो सकता है, हाँ, ठीक है? इससे ये एक खूबसूरत बात, है। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? और जो दूसरी बात मैं सोच रही थी जब आपने मुझे बोला ना कि 10 मिलियन व्यूज या वायरल हो गई पोएम, तो मैं थोड़ा डर गई क्योंकि वायरल होना, लोगों तक पहुंचना बहुत सुंदर बात है। हम सब चाहते बिल्कुल हैं कि ओवरनाइट बिल्कुल हमारे फॉलोअर्स 1 लाख हो जाएँ इंस्टाग्राम पे और ज़्यादा, राइट? मेरे 4,000 है तो मैं कंजर्वेटिवली सोच रही हूँ। लेकिन इट आल्सो एक्सपोजेस यू टू अ लॉट मोर पीपल, नॉट ट्रू ऑल ऑफ हू विल सी यू काइंडली, वेरी एंड ट्रू आई एम श्योर आपने वो फेस किया है। लेट्स टॉक ओ अबाउट सो दैट। मच बहुत गाली पड़ी है मुझे बहुत आई वांट टू कम टू दोस गालीज बट इसी पोम के ना एंड नाउ तो आई हैव लर्न टू लाफ ऑन देम सो आई टेल यू वन फनी वन इसी तुम खूबसूरत हो के कमेंट बॉक्स में एक लड़का था जिसने एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग लगाई थी और उसमें लिखा था कि लड़कियों को अक्सर ऐसी बीमारी हो जाती है उसका कुछ नाम भी था मैं भूल गई मतलब कि उससे जिससे उनको लगता है कि उनसे खूबसूरत कोई नहीं like, who is this boy who's finding this and उसने एक न्यूज पेपर क्लिपिंग का एक वो भी लगाया जिसमें उस बीमारी का नाम और उसकी एक बीमारी है अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत तो एक और पोइट्री थी जिस विच वाज अबाउट उसका एक रील डाला था तो वो पूरी कविता नहीं थी विच वाज अबाउट कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन योर हस्बैंड टू बी तो वो था कि पंखों को मेरे सहलाए भी और ऐसा ना इसमें वो छोटा सा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है तो नीचे उसके कमेंट है हाँ तुम कुत्ता ढूंढ रही हो तुम्हें चाहिए कोई बस तुम्हें तुम्हारी सेवा करे तुम कुछ मत करो इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द पोम वो पूरी कविता भी नहीं थी तो पीपल डोंट रिसर्च और वो बस आई स्टार्टेड टू लाफ ऑन इट नाउ बट हाँ आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड द फैक्ट दैट व्हाट आई डू इज नॉट मतलब बहुत फनी इंसिडेंट है कि मुझे नहीं पता था व्हाट इज मीटर व्हाट इज बहर मैं लिखती थी दिल से लिखती थी है ना और मैंने ऐसे ही अपने फेसबुक पे शेयर कर रखे थे जो कुछ लिखा था आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग जहां से भी वीडियो आता था तो एक जनाब ने पूरा कमेंट किया कि कविता का बिल्कुल इन लोगों ने कचरा कर दिया है कुछ भी जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं आजकल की जनरेशन और उस कमेंट से मुझे पता लगा कि अच्छा जो मैं कर रही हूँ वो कविता नहीं है मतलब तो मैं क्या कर रही हूँ देन आई डिड सम रिसर्च एंड आई रियलाइज इट्स स्पोकन वर्ड इट्स फ्री वर्स तो मैंने बहुत लोगों से बात की और फिर मैं बहुत समय तक मेरा कॉन्फिडेंस भी गिरा क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैं कर रही हूँ वो कविता नहीं है तो मैं जब जिस चीज को बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मैं करूँ कैसे व्हाट डू आई बिल्कुल। कॉल इट है ना तो मतलब अब तक तो मैं कविताएं लिख रही थी अपने दिल से मैं कवित्री थी अब मैं क्या हूँ मैं स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ अच्छा मुझे हर बार ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा मतलब आई डोंट नो फिर मैंने कोशिश की लिखने की बट आई एम ग्रेटफुल समबडी मेट मी वेरी रिसेंटली in 2021 he's a writer he's written a lot of films a lot of his name is Kapil Mishra he's very big into the ad film industry hamara he told me that Nayab, you have something unique and people already resonate to it. Don't try to fit in. You're doing the same thing you did in the past and you never did. So don't try it again. Which which is why I picked up my pen again. Ki nahi, it's okay. It's okay if I don't know if that is what you call the craft. It's okay. I might learn, I might not. That was not the purpose of it. Yeah, and you have cultivated your own audience, Nayab. Again, congratulations for that. Thank you. But this is what happens. जैसे मैं समझती हूँ कि आप समझती हैं मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती है, लेकिन जितना पब्लिकली मैंने इनफेमी झेली है विद द सेम कमेंट्स, Hmm? क्योंकि आप लाइव कर रहे हैं, आप ऑनलाइन हैं, एक आध बिल्कुल लफ्ज ऐसा निकल जाता है जो आप इंटेंड नहीं करते, बट वो फिर ना आपका पूरा कैरेक्टर डिफाइन उसी एक चीज से होना शुरू हो जाता है कि बिल्कुल ये बताएंगी या ये बात करेंगी, बाबा आपको नहीं अच्छा लगा आप मत सुनिए, आप मत वो सुनिए ढूंढिए जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है. एंड आई नो दैट देयर इज दिस ऑडियंस दैट लिसन्स टू यू, राइट? yeah एंड आई थिंक योर ऑडियंस इज अमंग्स फीमेल्स मोर. एम आई करेक्ट और रॉन्ग? yeah. So if I talk about data from my Instagram, it's
50-50, and I'm very grateful that I don't have so many men following me, and it's because it's very easy for people to say कि अरे लड़की blogger है, follower बहुत easily मिल जाते हैं, but I'm very grateful that if you see my data, I have 50-50 each, and it's more women. It's 51-49. It Wow. keeps changing slightly, but I would say overall on the whole scale from all the platforms and whenever it's more females. I would say that. It's more females, yeah, because I can understand. It's very personal, it's very subtle, it's very soft storytelling Yeah. as well. So हमने bad responses की तो बात कर ली, पर Hmm. कुछ ऐसी बातें भी आपने सुनी होंगी अपनी कविताओं के बारे में, जैसे एक आपने कपिल जी का एग्जाम्पल तो मुझे दिया, Huh. बट जो ऑडियंस मेंबर्स मेरी जैसे जिन जो फेसलेस हैं, राइट, इनमें से कोई लोग हैं जो आपको रीच आउट करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, एंड कुछ पर्सनल, क्योंकि मैंने देखा ये हो जाता है जब हमको लगता है ना कि हमारी कहानी कोई और बता रहा है, स्टेज पे बैठ के कोई और बता रहा है, तो Hmm. हम एक पल के लिए बिखर जाते हैं, है ना? Hmm. तो ऐसा भी आपके साथ कभी कुछ हुआ है? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा होता है, एंड आई मैं खुद बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ, तो आई ऑल्सो इंटरैक्ट, मतलब मेरे सारे डीएम्स मैं पूरी, मतलब हाँ, जब मुझे लगता है कि किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है एंड कुछ बहुत जेन्युइन, कुछ प्योर है, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करती हूँ. एंड दिस वन आई रियली वांट टू मेंशन इज दिस बॉय. ये जो कविता है हमने एक ब्रांड के साथ की थी, एंड इट्स अबाउट हाउ अरेंज मैरिजेस आर ऑलवेज नॉट द राइट ऑप्शन. माइट बी, माइट नॉट बी, बट जान लेना बहुत जरूरी है दोनों सिनेरियोज में. इवन इफ इट इज एन अरेंज मैरिज, you still need to give people their courtship period to know each other. It's very important. So हम लोगों ने वो किया था, and it was about that fact that it's great if you know somebody, and you know parents should understand this. And ये पूरा एक कविता में था, और वो रिलीज हुई, और उसके कुछ दिन बाद मेरे पास एक लड़के का डीएम आया कि उसकी बहन की उसके पापा जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, और उनको समझ नहीं आ रहा था. एंड शी हैड अ बॉयफ्रेंड बट शी आल्सो वांटेड टू स्टडी, और उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे बताएं, थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव फैमिली थी. तो रात को दोनों भाई बहन ने बात की, एंड सच एन अमेजिंग सपोर्टिव ब्रदर. आई वाज वेरी ग्लैड टू हियर, वेरी स्वीट. तो उसको, एंड ही वाज स्क्रॉलिंग, एंड माय पोएट्री वाज जस्ट रिलीज, तो उसके पेज पे आई, and he sent it to his father. Morning, his father woke up, might have heard, I don't know how. He said that, okay, if you want to take time, take time. I'm ready to meet if you have somebody. And I was like, what? This is a huge change. And if I have that power, I couldn't have been happier. That was the best. मतलब वही तो पर्पस था of that poetry. And if it changed one person's life, made one father agree to meet a girl's boyfriend, I'm there. I'm done. If I die tonight, I'll be happy. Like, Absolutely, matlab don't हाँ, die. Absolutely don't die till you like, churn out. I mean, mashallah, so many more pieces of poems that people remember and which keep affecting people's lives. But wow, like I'm हाँ, really glad that I got to yeah, hear this story from you. yeah. This is also, I'm reaching out to the audience. If you have any questions for Nayab, keep posting them in comments. And as and when we get time, we will definitely request her to respond to you as well. Nayab, इस बात पे ना ब्रेक लेते हैं एंड ठीक है. सीरियस बातों पे दोबारा आते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स दैट आई वुड लव फॉर यू टू रिसाइट, राइट? एनीथिंग Okay. बट सीरियस नहीं करना है ना. एज यू वांट. अच्छा, एक काम करते हैं, पूरा वैलेंटाइंस चल रहा है ना, लेट्स टॉक अबाउट दिस. क्योंकि ये मैंने सोचा था कि मैं सुनाऊंगी, एंड इट्स नॉट आउट येट, सो इट्स फ्रेश. Yay. मुझे नहीं पता. हाँ, so You're I'll all just hearing go. it for the first time on She the People TV Feminist Poetry Festival. Good job. ये so ठीक है. आई हैव ऑल्सो केप्ट इट, मुझे याद भी नहीं है, तो मैंने सामने अपने रखा है. तो ठीक है. आराम. ये ख्याल बोलूंगी, मैं कविता बोलने की गलती नहीं करूंगी इससे पहले मुझे कोई गाली दे, बिकॉज ये है भी नहीं, ये कहानी है, ख्याल है, मुझे नहीं पता क्या है, बस जो है सुन लो. तो हाँ, आज से करीब 8 साल पहले, आज से करीब 8 साल पहले पहली बार उससे दूर अपने सपने पूरे करने निकली थी, एक बड़े शहर की ओर. वो बहुत नाराज था मुझसे कि मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ. आखिर हम दोनों एक दूसरे का बचपन वाला प्यार थे. मम्मी से डांट पड़ने के बाद वाले आंसू, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने की खुशी, मेरी नौटंकी, अवार्ड्स जीतने का नाटक करने के बाद वाली वो फेक स्पीच, और पता नहीं क्या क्या. उसने सब देखा है मेरा, मुझसे कितना ही नाराज रहता. मेरे हर महीने आकर उससे मिलने के नादान वादे पर झट से मान गया. पागल कहीं का. उसे मेरे सपनों की मुझसे ज्यादा कदर थी शायद. उसने मुझे उनके लिए तड़पते देखा था.
खैर, मैं भी अपने वादे पर खरी उतरी। मैं हर महीने उससे मिलने जाती, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, अपने लिए भी। जैसे मेरा सुकून उसी के पास रहता था कहीं। उसकी कुछ मजबूरियां थी, इसीलिए मेरे साथ नहीं चला। मगर मैं हर महीने जब भी घर आती, बाहें फैला कर खड़ा रहता, मुझे उनमें भरने के लिए। उसकी बाहों में इतना सुकून था कि क्या बताऊं। ख्वाबों के शहरों की सारी खरोचों पर मरहम लगा देता था, ताकि मैं फिर जाकर लड़ सकूं। यूं ही थोड़ा वक्त बीता, हम खुश थे। फिर इस बड़े शहर और मेरे छोटे ख्वाबों की मांगे बढ़ने लगी। कभी कभी 2 महीने बीत जाते और मुझे खबर तक नहीं लगती। हाँ, मगर मैं फिर ज्यादा छुट्टियां लेकर उसे मनाने जाती और वो पागल मान भी जाता। नादान कहीं का। सब कहते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्क। सब ठीक ही कहते हैं शायद, क्योंकि मोहब्बत के बिना कहीं भी कैसे जिया जाएगा, और यादों के सहारे दिन निकलते हैं जिंदगी नहीं। मैंने उससे काफी बार कहा कि वो मेरे साथ आकर यहाँ रह क्यों नहीं लेता। हर किसी को वो ख्वाबों वाली दुनिया नहीं मिलती शायद। पता है, वहां मेरे माँ बाबा का ख्याल भी वही रखता है। वो सबके लिए जीता है, इसीलिए शायद वो टस से मस होने को राजी नहीं, और मुझे हर बार अपनी मजबूरियों का कच्चा चिट्ठा सुना देता है। मगर मेरे पंख उसकी मजबूरियों का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसीलिए उड़ाए। आज साल भर बीतने वाला है वापस लौटे को, मगर ना तो उसकी कोई शिकायतों से भरी चिट्ठी आई है, ना ही कोई नाराजगी से लथपथ खत। पिछले कुछ सालों में हम दोनों ने सीख लिया है कि मोहब्बत फासलों की गुलाम है शायद। वो जानता है कि मैंने इस ख्वाबों के बड़े शहर में कहीं दिल लगा लिया है, इसीलिए मेरे काम और बिजी होने के बहानों पर मुझे समझने का इशारा करता है। मैं आज भी उसके पास जब कभी भी जाती हूँ दौड़ते हुए। वो मुझे अपनी बाहों में भी भरता है। मगर हम दोनों जानते हैं कि हमारी इस मोहब्बत में काफी ढोंग है। असल बात तो ये है कि हमें एक दूसरे से सच कहने में शर्म आती है, इसीलिए वो मुझसे अब अपना अकेलापन नहीं बांटता और मैं उससे अपनी खुशियां। इतना अपना होने के बावजूद भी पराया सा लगता है। मेरे बचपन का प्यार, मेरा घर, अब मुझे घर कहाँ लगता है। बस चंद दीवारें जिन्होंने मुझे सपने लेते हुए तो देखा, मगर पूरा करते नहीं। दीवारें मजबूर हैं, हर दफा महफूज नहीं रखती, तुम्हारे साथ नहीं चलती। सच ही कहते हैं शायद, हर किसी को ख्वाबों वाली दुनिया नहीं मिलती। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! नायाब, मुझे सही लगा था आपकी पोएम्स के बारे में कि एक पूरी एक इमोशनल जर्नी पे आप ले जाते हैं एंड माशाल्लाह परफॉर्म इतना खूबसूरती से करते हैं दैट आई एम श्योर दैट जितनी मुझ तक पहुंची ये पोएम, ये कहानी, है ना? मैं उस स्पेस में ही नहीं हूँ कि मैं इसको जज कर पाऊँ, देख पाऊँ इसमें टेक्निकल कहाँ था। ये आपकी और मेरी चर्चा भी हुई है कि इसमें मैं टेक्निक कहाँ ढूँढूँ, इसमें मैं स्किल कहाँ ढूँढूँ, इसमें भाव है। इसमें भाव है, एक कहानी है, एक सफ़र है, जो अगर मुझ तक पहुँचा और अगर मेरे चेहरे पर एक स्माइल फूट गई या वो इतने सारे इमोशंस दिखे, तो व्हाई नॉट? एंड कुडोज़ अगेन टू द वर्क दैट यू आर डूइंग। सो वी विल कम बैक टू सम क्वेश्चंस। आप पहले आपने बोला कि आप छोटे शहर से हैं, श्रीगंगानगर, है ना? जी राजस्थान। जी। तो राजस्थान में जहाँ तक लड़कियों का ज़िक्र आता है, तो बहुत पॉज़िटिवली नहीं आता है ना? एक जो कॉन्स्ट्रक्ट है वहाँ का अभी तक पैट्रियार्कल है, ऑप्रेसिव है और इनफैक्ट हम बहुत यूफेमिस्टिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। देयर आर एक्टिव क्राइम्स आल्सो, देयर इज़ एक्टिव सप्रेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड एज़ वेल इन राजस्थान। एंड यू हैव फ्रॉम देयर टिल हियर अगर मैं जर्नी देखूँ तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर वो आपका प्रोफ़ेशन है। बट you've chosen a very creative art to express yourself and it's not कि आप लिख रही हैं और किताबों में छाप रही हैं, आप एक्टिवली स्टेज ले रही हैं, आप एक्टिवली खुद को दुनिया के सामने पुट आउट कर रही हैं। इस सफर में कोई बैकग्राउंड के साइड से, कोई फैमिली के साइड से, कम्युनिटी के साइड से कभी आपको लगा कि जजमेंट या रेजिस्टेंस आ रहा है? um honestly, now currently, and when it comes to poetry, my parents have been always very supportive and I'm grateful. But जब मैं बड़ी हो रही थी, as I said that my mother is a bigger family feminist if I had to calculate, तो मेरे को हमेशा से वो सपोर्ट रहा है कि मैं कुछ भी करूंगी तो मेरे पीछे कोई है।
तो है ना कि अपने पीछे है कोई, तो और वो मतलब है वो एक चलता फिरता गुंडा, बोलने का मन करता है मेरा उनको. एंड शी फॉट फॉर मी लाइक क्रेजी. बट जब मैं बात करूं ऑफ माई सराउंडिंग्स, द पीपल आई हैव ग्रोन अप विद, माई फ्रेंड्स, द पीपल आई स्टडीड विद, acquaintances, and the fact that not most of them are married, have kids, some of them are housewives, and I don't think true liberty has come to them, true freedom, if they have ever experienced. And one thing that saddens me the most is, पता है क्या होता है, चीजें ऊपर से दिखने में खूबसूरत होती रहती हैं वक्त के साथ, और अंदर से वैसी की वैसी हैं. तो आप बोलो कि हाँ अब हम अपनी लड़कियों को पढ़ा देते हैं, पर पढ़ाने के बाद this is one thing that I said to somebody, and there was a huge fight also about it, that you would never be happy if she got a huge ass award. You know, you will never celebrate it with your life saving, but you will celebrate her wedding with your life saving. Would you celebrate an award with 25-30 लाख रुपए? नहीं, you will, like, you know, मिठाई का डब्बा उठाओगे, गलियों में बांट दोगे. But still, till this point, the wedding is the largest and the biggest happiness of the parents' heart and all of that. तो वो मुझे लगता है कि वो ट्रूली चेंज हुआ है. एंड कमिंग टू दोज वुमेन, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने भी बहुत रिसेंट किया, नहीं, दे जस्ट एडजस्टेड टू इट, बिकॉज एट एन एंड आपको अपने पेरेंट्स की खुशी से ऊपर कुछ अच्छा नहीं लगता. आज मेरी माँ अगर मुझे बोलेगी कि नायाब यार शादी कर ले, मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तो मैं कर लूंगी ना, मेरी माँ है. तो वो फिर मैं, मुझे लगेगा मुझे ही थोड़ी पूरी दुनिया बदलनी है, जाओ ये कोई और बदलो. मतलब यू डू बो डाउन व्हेन इट कम्स टू फैमिली. तुम हर जंग नहीं लड़ते हो, बिकॉज एट दिस एज यू फील दैट यू नो योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, यू नो यू वांट टू गिव देम एवरीथिंग यू वांट. क्योंकि जब तुम इस उम्र में आते हो, मुझे लगता है, जितना जैसा मुझे फील होता है, you want to give them whatever they want, because the kind of upbringing we've had, and you also try to find your own happiness. जो freedom आप ढूंढ रहे हो ना, आपको लगता है कि वो मिल जाएगी आपको शादी करके. हाँ, वो उसी फ्रेमवर्क में हम तलाश हम लेंगे बड़े हुए हैं. इरिस्पेक्टिव. तो हाँ, तो हम ऐसा, हाँ, एडजस्ट कर लेते हैं. I would not give my personal example because I convinced my parents to grow with me, and both my parents were educated, so they chose literate. They choose to be literate about what am I doing, and हमारे बहुत झगड़े हुए हैं, ऐसे नहीं हुए. I won't say that it was bed of roses, never is, but I convinced them, and I'm glad that they got convinced. But I'm aware of the space I come from. Parents do not get convinced that easy. Right, right. And your community, I mean, I know आपने थोड़ा सा तो बोला, but you're out there on this stage. Have you seen judgment come, like not on your content so much, but कहाँ, क्या, कैसे, कितना travel, stage, लड़कों के साथ, इधर उधर, सब कुछ? It's not even just my community. Back then, I'm living in Delhi, and I don't think it's a state thing anymore. uh, One of my friends called, my ma is a businesswoman, and a fierce businesswoman. So a friend of mine, while talking, was shocked. There was a conversation happening, and I'm talking Delhi, I'm not even talking Rajasthan here, because मैं बहुत कम समय रही हूँ, so to understand all of that, मैं 16 साल की उम्र में तो निकल गई वहां से. तो this is a few years ago, we were in college, and a friend of mine said कि हाँ बेटा, अब तेरे पापा को बताऊंगा और फिर तेरी पॉकेट मनी आनी बंद हो जाएगी. A friendly conversation, and something was happening, and he was chilling, and I said कोई बात नहीं, मैं मम्मी से ले लूंगी. And he said मम्मी भी तो पापा से ही लेगी ना. I said why? Oh, तो कह रहा और मम्मी कमाती है. I said yes. And one of the other person in the same car, he was shocked that my mother earns. I don't know why. This is Delhi, I'm telling you. Rohini though, but and and then this is the other 21st person, century Delhi. yeah, and this I was in college. It is that guy back in Rohini, and the other person who knew what my mother does said, "Ha, dalal hai," and I was like, Oh, oh, wow. "What? Wow. What do you think? This is not just my parents' generation. I think it comes with the right kind of education." And I remember I asked him to stop the car. I got off the road. I cried. I definitely cried. And one of the persons I was with for a period of time also, like we were friends, and he gave me a gift, and then he asked me to be his girlfriend, and I denied, and he called me up and said that औकात हो तो मेरे पैसे लौटा देना, and all of that, it comes to you. And why, even when I hang out with more men, even my girlfriends back in home, my friends, their parents ask them to not hang out with me because I'm too out loud and I'm too open and all of that. Yeah, that's there. That, and it's not today, it's always been there. Wow. Because my name is Wow. Nayab, so one of my friend's father said, and I had a scooty. So I used to help my mother a lot in her work, and it involves a lot of going out and form filling and all of that. So I used to help her. She used to send me, and we've been
it was not a big task, and it was never, आप किसी चीज को जब बड़ा मानते हो ना तब वो बड़ी लगती है, तो मेरे लिए वो बड़ी बात ही नहीं थी। मम्मा ने बोला जाओ जाकर ये करके आओ, मैं करके आ गई। अब लोगों को मैं दिन में 4 बार स्कूटी पे गेड़ी काटते दिख रही हूँ इन द लैंग्वेज ऑफ माय होम टाउन। वन ऑफ माय फ्रेंड्स फादर सेड दैट, अब मेरी फ्रेंड को, एंड शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, की उस मुसल्ली के साथ घूमती हुई दिख गई तो तुझे बहुत मारूंगा, बिकॉज माय नेम इज नायाब। इट इन्वॉल्व्स अ रिलीजनल remark which is wrong. It involves a sexist remark which is wrong. It involves a lot of things that It are is wrong. just wrong. It It is is wrong just with so wrong. many Yeah. levels that we can keep, Yeah. So unlayering it. But this is how our identities are also branded, na Baba. my school Representative teachers, my practice us. school teachers, oh my god, they've bullied me like anything, because my mother never, I remember my mother stopped me to tie rakhi in school, because she said ki you have a brother at home, and because she knew ki kahin jata nahi and they might become toxic. She said school mein friends hote hain, ghar pe you have a family. If you hadn't had one, I would have asked you and helped you find one, and we could have kept a relationship with. She was right about that, because the guy I tied rakhi started dominated me like anything, and I Wow. had to get out of it, honestly. But Yeah. I don't come from where talking to men was huge thing from my mother. I was always scared of my father, I won't deny that, always, because we Yeah. did not have that kind of friendship. Now we have. I'm Mm. grateful. But Yes. my mother always told me that you have friends and you can call them home, you can study with them. My mother was a teacher, a school principal. We always had boys coming and we were, having group study sessions. I maybe it was sort of awkward or orthodox for other people, or बहुत loud for other people, but I've always had that, and now I've just started to adjust with Yeah. it. No, please don't adjust with anything in life. Adjust You're, as in, I would say I'm just not giving yeah. anything Yeah, to you're it. not I'm giving it the time and space, and which you would much uh, rather keep for yourself. But thank you again for being so raw. I honestly, for one, didn't expect this session to take this turn. Okay, and I'm really glad we have also kept this session very free flowing. You have not asked me for questions. I have not offered you a list, and we have mutually decided कि जिस yeah, दिशा में बातचीत जाएगा. जाएगी उस दिशा को पकड़ के हम आगे निकल लेंगे। एंड ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि लोग हाँ सुने, अनकंफर्टेबल वर्ड सुने, हाँ क्योंकि हमें कहे गए हैं, हाँ, है मैंने ना? सुने हैं. So if it makes you आपके uncomfortable, I'm नाम पर sorry. कहा गया है, हमने नोज़ रिंग पहननी शुरू करी थी, तो हम्म, तब बोला गया था हाँ, हमको बिल्कुल कि ये बिल्कुल. क्या लगा रखा है, ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो। मैं हाँ, मैं अभी भी ये शब्द नहीं निकाल पाती, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो डिस्कम्फर्ट हम एक्चुअली फेस करके बाहर आए हैं, इसको yeah. दुनिया में वापस छोड़ दिया जाए, कि ऐसा होता है। Why should I feel shame speaking these words? Because I didn't say it at first. I've heard them. I am just telling you a story honestly. Why would I use a better word? Sorry, I won't. Nirbhaya, you remember the Nirbhaya Kand? And I don't think that was the most horrible time of the world. And that was the first time I recited a poem in public. हाँ, The first time. ओके। Because anything, मैं लिखने लगी थी क्योंकि मैं बहुत ही मिसफिट थी, तो मेरे को जो दिल में आता था मैं कभी घर पे नहीं बोलती थी, because I always felt that my mother and even my father are always already working too hard and they are emotionally anyway, messed up. So मैं कभी घर पे आके नहीं बताती थी. That was the mature behavior I showed back then. So I used to write. That's where poetry came into picture. And तो मैंने निर्भया के लिए लिखा था कि समझ नहीं आया क्या करूं. So there was a candle march happening, and I asked my mother, can we lead one? Can we हाँ, lead one, please? And she said yes. So I invited all my friends and a lot of boys. I'm very happy that जो मेरे friend circle थे from my hometown, they're very literate, very, and they were never judgmental about me. I've had a good set of 4-5 friends, and all of those men came. One of my friends said that मेरे पापा ना आने नहीं दे रहे हैं ना, अब क्या करूं? So I said, let me talk. So her father said कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां ऐसे काम के लिए नहीं जाएंगी. And it was a candle march, and I was so angry at that point of time. I remember there was जो वो लाउड स्पीकर वाला रिक्शा रहता है, वो एक जगह पे जहाँ पे रुका, जहाँ पे सबको कैंडल जलानी थी, मैं वो रिक्शा पे खड़ी हो गई. I couldn't control, and I gave a whole speech, recited the poem I had wrote. Next day, I was all over newspapers for what I don't know, and I'm sure it was not good for the newspapers also. Like I'm Good. sure it was not We are well in a received. judgment-free space. Let Yeah, me put that out yeah. here. We are in a No, no, I judgment-free am saying, space. yeah, yeah. But Yeah, yeah, I mean, because otherwise, I think both of us are very excited to talk. Because otherwise, how will all of this that we are experiencing come out if we also constantly put ourselves through the lens of judgment, yeah, right? I mean, Nayab, right. that's also conditioning, right? And I'm really glad that now you're owning up that space. Now you're saying, I'm not going to mince my words.
This Yeah. happened to me. I didn't do this to anyone, right? And the bare minimum I need to do is that I need to report it out. I need to tell this out Yeah. to people. And Definitely. again, I'll be honest here. I thought हमारा बहुत ना प्यारा सा स्वीट सा सेशन, आपकी पोएम्स, हमारी प्यारी प्यारी बातें, तो उधर ही खिंचता हुआ चला जाएगा. But no, I'm glad we're having essential True. conversations. But because I only have 10 minutes left, I would also like to go back to your poetry, because that's why you are Nayab, the Instagram sensation and the viral sensation. And yes, I've also seen Nayab's performance along with music. She does this amazing session called Shame Mehfil along with another artist, another prolific artist, Bhuvin. Yeah. And to be able to partner and own up your space. Again, the stage space is so occupied by men, right? Yeah. So Nayab had come to Himachal Pradesh for this lovely festival that happens here. Yeah. And I remember that amongst 15 artists, she was the only female in the entire lineup, I in the didn't entire expect that. line. I didn't expect that. I was, see, I that is what I'll come to you, because when you're raised right, I think when you educate, and even I had to unlearn. I'll not deny, I had to unlearn massive things, and I made my parents and everybody I meet, I tell them that you have to unlearn. So, last till the last moment, when all the artists got on stage, I did not realize this, because I don't see, when I see the stage, I don't see कि कोई लड़का है लड़की. I have learned कि to expect equality, I have to see the world with that lens. तो मैं नहीं notice कर पाई, but जब मैंने notice किया, yeah, I was very glad also, and I was also somewhere कि why? Because most people do not have the privilege that they're allowed to go to a mountain and perform. ये भी एक factor है कि अकेले कैसे आप जाओगे. बिल्कुल मेरे, बिल्कुल. I think अब मेरे घर वालों ने accept कर लिया कि ये सुनेगी नहीं, तो rather we should agree that they've Yeah, also you're come to part of a, the journey. Yeah. we've both worked. So I don't ask for things that would make them so uncomfortable, and they also bear little uncomforts with. Yeah, I think also when we talk of being feminist, right, it's also seen as a very vehement, as a very violent thing, right? आपको मेरी स्टोरी पता है ना? मतलब आप तो ट्रैवल कर रहे हो इधर उधर, मैंने तो एक पॉइंट पे बोल दिया कि नहीं जी, मैं तो पहाड़ों पे जा रही हूँ जा एंड रहे मैं हैं. तो वापस ही नहीं आऊंगी, right? And therein you see the resistance, but it's also how we communicate, right? Yeah, We don't have to make the world anti. I can't have my parents anti me, right? yeah, I want them to go travel with me. So this suffer yeah, becomes beautiful. And for that, I will hustle. yeah. Right. And I think you've done the same. So, so pretty. So, okay, time is running out too fast. Yeah. But, okay, here is another question. Where do you get your poems from? Where do you get your words from? Where does your vocabulary? Where does your choice of idiom? Where does your choice of words? Your choice of thoughts? Your choice of flow? Where does your poetry come from? Okay, so it's a very funny incident. My poetry for the first time came out of the fact that I have always, as I mentioned, I was always feeling inferior, misfit. So for once, I wanted to feel better. There was a creative writing competition, ninth grade school, and English theme was patriotism. And there was a teacher board पे लिख देता है कि आप ये सब कर सकते हो, article, essay, poetry, and I knew that nobody does this. So to sort of stand apart and feel better about myself, I thought I'll write a poetry. And I remember the first two lines. I think once I was sitting under a tree and I was thinking how my country became free. So, but I could never go back. So I don't have an answer. I could never go back because once I expressed myself that way, तो मैंने पहली 5 कविताएं अंग्रेजी लिखी, उसके बाद मैंने एक हिंदी लिखी और उसके बाद कुछ अंग्रेजी नहीं लिखा. So my vocabulary also comes from my father. He's very good with Hindi, Urdu. Both my ma also. जो पहले initial है वो मेरे घर से आता है, and I've always been a good reader. Not as good as you, Saumya, but I'm very inspired कि अब मैं साल में मैं भी हर हफ्ते में एक किताब पढ़ूंगी. तो वो मैंने पिक किया है. बट हाँ हमेशा मैं एक किताब मेरे पास रहती थी, बिकॉज जब मैं कहीं फिट नहीं कर रही थी तो आई वॉज ऑलवेज रीडिंग, बट इट वॉज ऑल इंग्लिश. बट हाँ, मैं सोचती वही इंग्लिश वाला हिसाब है, तो मैं गूगल कर रही होती हूँ वर्ड्स की इसका मतलब क्या होगा, हाउ कैन आई राइम इट. आई डू hustle there, but it comes from the stories I read. It comes from my personal experiences. That's all I see, all I read. That's it. Perfect. Yeah. I have a lot in my mind, and I know I'm Huh. a big
a lot of threads from this conversation in hopefully when you come to Himachal to spend time Yeah, with us. But till then, why not also bring this session to a close with another poem? I done. believe there is one that is very focused on women, their Yeah. experiences, which we can call feminist actually. Yeah, definitely. What this And next it's one? the most feminist I would say I've ever written. It's called नानी की कहानी. And as we discussed that, हमको लगता है कि हम जो सब ढूंढ रहे हैं, वो एक शादी के बाद हमको मिल जाएगा. The kind of freedom and the because we've been sort of brought like that. That's what नानी कहानी is about. It's again a story, khayal poetry, not calling anything. It But is हाँ जी, my humble request that you go ahead and call what you think is poetry as poetry, Nayab. I'll tell you why this is important. Sorry, I know this is your हाँ जी. session, but I No, also need this to go out in front of the world. You're there, you're popular, and inadvertently, yeah, deliberately, there is a lot of impact that people like you, people like us are creating on people who are still scribbling चुपचाप सहमे सहमे अपने ना registers के पीछे कि ये हमारा ख्याल है, पता नहीं ये कविता है, पता नहीं ये कविता नहीं है। मैं मानती हूँ सब सीखो, खूब सारा पढ़ो, लेकिन अपनी वॉइस किसी और में नहीं तलाशो। नहीं, तो अगर बिल्कुल. तुम कन्विंस्ड हो कि जो तुम लिख रही हो वो पोएट्री है, तो उसको कॉन्फिडेंटली पोएट्री बोलो। नहीं तो एक नया बिल्कुल. जॉनर बना देते हैं जिसको ख्याल बोलेंगे, है ना? इस पे बात करेंगे हम बाद में। अगली बार. अभी के लिए ये कविता है जो कविता तुम है परफॉर्म कर रही हो जिसका हमारे नाम लिए। है नानी की कहानी. मैं हर गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाती थी. नानी हर रात तारों की छांव में ले जाकर हजारों लाखों कहानियां सुनाती थी. उन सब कहानियों में से एक राजकुमारी की कहानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी. इस कहानी में राजकुमारी हर दफा किसी मुसीबत में फंस जाती थी. कभी गुंडे जकड़ लेते, कभी दरिंदे पकड़ लेते, कभी तंग थी अपनी सौतेली माँ से, या कभी गुम थी अपने ही जहां से. और फिर ना जाने कहां से एक राजकुमार आता, उसे इन सब से छुड़ाकर अपने जहां में लेटाता और वहां उसका एक खूबसूरत सा आशियाना सजाता. तो एक दफा तो एक दफा मैंने भी नानी से पूछा, नानी क्या कोई मेरा भी राजकुमार आएगा? नानी क्या कोई मेरा भी आशियाना सजाएगा? तो नानी ने कहा, हाँ पगली, तुम हमारी राजकुमारी ही तो हो, आएगा ना, आएगा क्यों नहीं. उस दिन से जैसे इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई. मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, बड़े से बड़ा सपना उस राजकुमार के इर्द गिर्द लिपटता चला गया. और माँ कोई ख्वाहिश पूरी भी तो नहीं होने देती थी. मैं जब भी पूछती, माँ 9 से 12 मूवी जाऊं, माँ कॉलेज ट्रिप है, जाने दो ना, माँ मुझे घूमने जाना है, दुनिया देखनी है, तो माँ घूरने लगी. मगर मैंने भी कह दिया, माँ बात इस घर से दूसरे घर, दूसरे शहर तक जाने की नहीं है. बात है उस घुटन की जो इस दिल में बस गई है, जो उस दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी है कि कोई आएगा और इन कंधों पर पंख लगाएगा तो मैं उड़ती फिरूंगी इस छत से दूसरी छत, घर से दूसरा घर, देश से दूसरा देश, और इस दुनिया से शायद वो दूसरी दुनिया, वो सपनों वाली. तो माँ मुस्कुराई और बोली, आएगा ना तुम्हारा राजकुमार तुम्हें ले जाने, उसके साथ जाना जहां जाना हो, ये दुनिया एक अकेली लड़की के लिए ठीक नहीं. हालांकि माँ को देखकर सवाल तो उठता कि वो तो ये सब नहीं करती, वो तो दिन भर हम लोगों के लिए है मरती. और उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश से इस घर में लगती आग, और उसके चेहरे पर पापा के गुस्से का वो दाग था. मुझे कोई और ही कहानी सुनाता, उसका राजकुमार कहाँ है और वो क्यों नहीं आया, ये मुझे कोई नहीं बताता. खैर खैर नानी कहती है कि मेरा जरूर आएगा. और वो आया भी सफेद घोड़े पर सवार, मैं लाल जोड़े में तैयार, बेवकूफों की तरह चल दी उसी के साथ, उसी के घर अपना आशियाना सजाने. मगर उसने तो इन आंखों में बसे सपने कभी देखे ही नहीं. और वो देखता भी कैसे? उसे खबर ही नहीं थी कि कोई रख देगा अपने सारे सपने उम्मीदें उसके कंधे पर. और उसे खबर होती भी कैसे? उसकी नानी ने तो उसको एक कहानी सुनाई ही नहीं, उसे बताया ही नहीं कि कोई रखता जा रहा है अपने सारे सपने उम्मीदें उस ख्वाहिशें उसके कंधे पर, तो उसका कंधा वो बोझ संभालता कैसे. तो एक दिन माँ की तरह उसके कंधे से गिरकर मेरे भी सपने चकनाचूर हो गए. किस्तें भर रहे थे जिस मकान की, बचपन से वहां से बेघर हो मरने को मजबूर हो गए. उस दिन एहसास हुआ
उस दिन एहसास हुआ कि ना ही माँ का और ना ही मेरा राजकुमार कभी आया था। इन कहानियों ने बस हमें बेवकूफ बनाया था। तो आज जब तो आज जब माँ मेरी बेटी को गोद में लिए उसी राजकुमार की कहानी सुना रही थी और बस कहने ही वाली थी कि वो राजकुमार आया, उसने राजकुमारी को गुंडों से, मैंने माँ को रोक दिया। मैंने माँ को रोक दिया और उससे कहा कि उस राजकुमारी ने उन गुंडों से खुद को खुद बचाया था, उसने अपना आशियाना खुद सजाया था। तुम भी सजाना क्या बात है, नानी क्या का। बात है, क्या बात है। पता है यूजुअली कभी जब पोएट्स रिसाइट करना बंद करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि पोएम खत्म हुई है, आगे जाने वाली है। बट आई हैव रियलाइज्ड ऑल द 3 times you've recited, I've been able to catch it because they are so well rounded, right? And like I said, it's storytelling in verse, kahaniya in verse, which is also the way she the people decided to brand this session and call this session, and I think that was very apt. And this was such a beautiful peek into who you are, how fierce you are while carrying this beautiful, gentle exterior. I also have seen how gentle you are. I've also seen how keen on learning you are while ensuring that your agency and your voice does not get compromised. And that is a beauty I hope to discover more of in the times to come. Nayab, thank you so much for being with us. I hope you had a good time. I did. I Completely. had a great time. I always love when I get to chat with you. I'm very grateful and I'm very happy for the work that She the People TV is doing, that the She the People platform is doing, and I keenly follow them. And it was also a great dream come true from where I come. So I'm again one more milestone to, like, one more feather, one more wing, and that too. It's not just the cherry on the cake; it's the whole cream and cherry on the cake that I got to do this with you.